केवल इतना ही बोल रहे हैं कि ग्लास पेन के सामने खड़ा सेकंड क्वेश्चन में अपने से बड़ी इमेज दिखाई दे रही है, तो व्हाट काइंड ऑफ मिरर डू वी एक्सपेक्ट इट टू बी? रीजन ही तो बताओ। कनकेव तो मैंने सुन लिया, व्हाई कनकेव? जो प्लेन मिरर होता है वो हमेशा सेम साइज की इमेज बनाता है. कन्वेक्स मिरर ऑलवेज produces an image which is smaller than the object, and concave mirror is the only mirror which produces an image which is larger than the object. So only concave mirror can be the correct option. Question number 3. Ray of light is अच्छा, ये तो हमने कर दिया थर्ड. तो क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 3 हमने अभी ये किया था कि अगर एक रे ऑफ लाइट जा रही है 30 डिग्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो कितना एंगल डिविएट होगी. दिस वुड हैव बीन द ओरिजिनल पाथ. रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई तो दिस विल बी द एंगल ऑफ डिविएशन 120 डिग्रीज इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 देखो. A convex mirror is used to form an image of a real object. Then the incorrect statement is. मुझे नहीं पता चल रहा आप बी बोल रहे हो या डी बोल रहे हो. The image is diminished in size. ये है incorrect. The image is real. This is incorrect. ठीक है जी. Why is it so? Because convex mirror always produces a image and the object is real. Question number 5. An object 20 cm from a spherical mirror gives rise to a virtual image 15 cm behind the mirror. The type of mirror and its focal length is. देखो try करके. बी ऑप्शन. इसका आंसर है बी ऑप्शन. हाँ जी, कोर्ट को पूरा फर्स्ट बेंच बताओ बेटा. ठीक है ठीक है. To be how much? Plus 60. And how did you get that? Sir, 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by u. ठीक है. And if focal length is positive, if the focal length is positive, that means the mirror has to be convex. हाँ जी. Anybody? ठीक है बेटा, take your seat. Anybody else? उसने बी ऑप्शन बताया. सेकंड ऑप्शन वो बता रही है कि करेक्ट है कि फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर से कन्वेक्स मिरर. एनी अदर आंसर?
क्या होता है मिरर फॉर्मूला? 1 by f equal to this is the formula we use. So 1 by f equal to 1 by 50 plus 1 by minus 20. LCM लेते हैं तो 60 आएगा. पॉजिटिव है ना? माइनस 3 1 by 60. F comes out to be 60 centimeters. That means the mirror is convex. Okay. Question number 6. A plane mirror makes an angle 30 degrees to horizontal. If a vertical ray strikes the mirror, find the angle between mirror and reflected ray. हाँ जी. इसका आंसर है 60 डिग्री. Whose answer is this? बोलो जी. Plane mirror horizontal line में देखो. Plane mirror ठीक है. vertical rays angle between the vertical ray and This angle is 30 degrees. The ray is coming vertically downwards. ठीक है. So angle of incidence is how much now? 30 degrees. After reflection, it goes back somewhere over here. This angle will also be 30 degrees. We have to find out the angle which it makes with the mirror. So we require this angle. How much is it? 60? Okay. This angle is 60 degrees. This is 60 degrees because it is a straight line, so this should also be 60 degrees. Therefore, 60 degrees is the correct answer for this question. Okay, thank you. Next, देखो 7th question. Mirages are observed in the deserts due to हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था मिराज फॉर्मेशन किया था. Yes or no? नहीं किया. Did we discuss total internal reflection last time?
Suppose we are considering a case in which the surface below is, the medium below the surface is water and above is air. If a ray of light is traveling from water to air, will there be any change in the path if the angle of incidence is 0 degrees? So, but if I change the angle, now this is the angle of incidence, let us say it is 30 degrees. What will be the angle of refraction? Refraction will take place because it is traveling from one medium to the other. Now my question to you is that if this angle of incidence is 30 degrees, what will be the angle of refraction equal to? 30 degrees, less than 30 or more than 30? More than 30. Why? Because the light comes from denser to rarer medium, the deviation is away from the normal, therefore this angle will be larger. Okay. Now, that means if we keep on increasing the angle of incidence, the angle of refraction will also go on increasing. And at some particular angle, the angle of refraction will be 90 degrees. This angle of incidence is known as critical angle. If the angle of the incidence exceeds the critical angle, then light does not go out but is reflected back. Because normally क्या होता है, whenever light is traveling from a denser medium to a rarer medium, जैसे water का example लेते थे, majority of the light goes out by refraction and a very small part comes back by reflection. But when the angle of incidence is more than the critical angle, then entire light comes back into water and no light is going out. That is why this is known as total internal reflection. किया हुआ है सबने? हाँ जी, all of you are familiar with this? No? So should I repeat this? Yes, sir. Beta, whenever light will travel from denser medium to rarer medium, it will undergo refraction. That we already know. Now, the only thing which you have to remember additionally is that since in such cases when light is traveling from a denser to rarer medium, the angle of incidence is smaller as compared to angle of refraction. So, as we go on increasing the angle of incidence, the angle of refraction increases by a much larger value. And at some particular angle of incidence, the angle of refraction becomes 90 degrees. This angle of incidence, for which angle of refraction is 90 degrees, is known as critical angle for the pair of medium. That is, in this case, it will be water and air. Now, if we further increase the angle of incidence, then no light goes out, no refraction takes place. All the light comes back into the denser medium. This phenomenon is known as total internal reflection. Is it clear? Yes. Let us note it down then. First is critical angle. First term is critical angle. Critical angle. When light is traveling from a denser medium to a rarer medium, then the angle of incidence for which the angle of refraction
is 90 degrees. Is known as critical angle for that pair of media. Next लिख लो total internal reflection. Total internal reflection for light traveling from denser medium to rarer medium if the angle of incidence is greater than the critical angle, then all the light gets reflected back into the denser medium. This phenomenon is known as total internal reflection. अब ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है एक बार फिर से पढ़ के देख लो. Mirages are observed in deserts due to the phenomenon of. मिराज पता है क्या होता है? How many of you know what is a mirage? Yes? Nobody else? कभी आपने नोटिस किया है कि समर्स में जब हम सड़क पे चल रहे होंगे समर्स में दोपहर के टाइम पे तो सामने सड़क पे कभी कभी ऐसा लगता है थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ है, लेकिन बाय द टाइम वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पानी नहीं था. ये जो फेनोमेनन है जिसमें हमें लगता है कि वहां पे कुछ पानी पड़ा है पर एक्चुअली में नहीं होता, दिस इज नोन एज मिराज. अब ये इफेक्ट डेजर्ट्स में ज्यादा देखने को मिलता है, स्पेशली जब वहां पे हॉट या समर सीजन आता है उसमें. इसको समझ लेते हैं व्हाट इज द कॉज फॉर दिस. जो हम यहाँ शहरों में देखते हैं कि सड़क पे हमें दिखाई देता है तो रोड का जो सरफेस है दैट इज मेड अप ऑफ तारकोल. और तुमने अगर कभी नोटिस किया हो कि जो रोड का सरफेस है उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है जब सनलाइट हो रही हो कंपेयर टू द सराउंडिंग्स. डेजर्ट में जो सैंडी सरफेस सैंड की भी सेम क्वालिटी है कि सैंड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और हीटिंग. तो ये जो मिराज फॉर्मेशन का फिनोमेनन है ये हमें वहाँ दिखाई देता है जहाँ पे ग्राउंड सरफेस बहुत ज़्यादा गर्म होता है. इसका रिजल्ट क्या है? अगर सैंडी सरफेस है या रोड है वहाँ पर ड्यू टू हीट, अब क्यों जो हीट एमिट करेगा तो जो ग्राउंड सरफेस के पास वाली लेयर्स है एयर की उनकी वो गर्म हो जाएगी. अब नॉर्मली क्या होता है
के डिफरेंट लेयर्स में जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं ना एयर के लिए, तो डेंसिटी ऑफ एयर कम होनी शुरू हो जाती है। तो नीचे वाली लेयर्स की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है जनरली, ऊपर वाले की कम होती है। लेकिन अगर हम हॉट समर सीजन की बात कर रहे हैं, तो अगर सैंडी सरफेस है या रोड है, वो इतनी ज़्यादा गर्म होती है कि जो एयर इसके कांटेक्ट में आती है वो इस हीट के कारण ज़्यादा गर्म हो जाती है, ड्यू टू विच इट एक्सपैंड्स। तो एक्सपैंड होगी तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो एज अ रिजल्ट जो यहाँ ग्राउंड के पास वाली लेयर्स हैं उनकी डेंसिटी कम है, लेकिन एज वी राइज अप द डेंसिटी ऑफ एयर इंक्रीजेस। इस तरह से एयर की डेंसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर हम ऐसा मान लें कि यहाँ कोई पेड़ है, कोई बिल्डिंग है और यहाँ कोई ऑब्जर्वर है तो उसको देखा, तो ऑब्जर्वर को पेड़ दिखाई दे रहा है सामने से, लेकिन साथ में एक प्रोसेस और भी हो रहा होगा कि यहाँ से जो लाइट है, अब लाइट तो सब डायरेक्शन पे जाने वाली है। मेरी डिस्टर्बेंस क्यों हो रही है? प्लीज स्टॉप टॉकिंग। लाइट तो सब डायरेक्शन में जा रही है, और जो लाइट नीचे को आ रही है ना, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की पहली कंडीशन फुलफिल कर रही है। लाइट शुड बी ट्रैवलिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम। तो यहाँ लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम की दिशा में आ रही है। जब भी ऐसा होगा तो इसको अगर हम थोड़ा सा मैग्नीफाई कर लें कि ये दो लेयर्स थी, यहां से लाइट आई, ये इसका नॉर्मल है, डिविएशन हैज टू बी अवे फ्रॉम नॉर्मल क्योंकि डेंस से रेयर में आ रहे हैं। तो अगर अगली लेयर को देखो, दोनों का एंगल ऑफ इंसिडेंस कंपेयर करके देखो। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस 1, दिस इज 2, कौन सा बड़ा है? 2। दैट मींस जैसे जैसे ये लाइट नीचे आ रही है, हर लेयर के साथ उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता जाएगा। अब इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस गोज ऑन इंक्रीजिंग, देन देयर इज अ वेरी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि किसी ना किसी लेयर पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा। तो यहाँ पहली रे से लाइट आई, इधर को मुड़ी, नेक्स्ट से फिर आई इधर को मुड़ी, यहाँ पे फिर इधर मुड़ी। नाउ सपोज करो कि इस लेयर पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होके लाइट ऑब्जर्वर की आंखों में पहुंचे। क्या यहाँ तक ये प्रोसेस समझ में आया? आ गया। अब इसके बाद जो हमारा माइंड है वो हमारे साथ थोड़ा सा ट्रिक खेलता है। वो ट्रिक क्या है? हमारे माइंड को आदत है तो वो ऐसा परसीव करता है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इसे ऐसा लगेगा कि ये जो लाइट इसकी आंखों में आई है वो यहाँ पीछे से आ रही है, बिकॉज फॉर अस लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो जो पेड़ यहां दिखना था वो उसे अब यहां दिखाई दे रहा है। दूसरी ट्रिक क्या खेलता है हमारा माइंड हमारे साथ, अब पेड़ यहां भी दिखाई दे रहा है और नीचे उसकी इमेज भी दिखाई दे रही है। अब ऐसा जनरली तो देखने को नहीं मिलता, तो हमारा माइंड अपने आप ऐसा इमेजिन कर लेता है एज इफ यहाँ पे पानी पड़ा हो। दिस इज मिराज फॉर्मेशन। समझ में आया है ये? इससे एक उल्टा रिवर्स प्रोसेस भी होता है। ये कर लो पहले, डायग्राम बना लो इसका। मिराज को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, बोला किसी ने सही। मृग तृष्णा। तृष्णा, ठीक है जी।
मरीचिका। मरीच नाम कहाँ सुना? सुना नहीं कभी? हाँ जी, is the process clear? अब ये जो मिराज फॉर्मेशन है इसका एक रिवर्स प्रोसेस भी होता है। जो कोल्ड कंट्रीज है ना, जैसे अलास्का है या साइबेरिया, वहाँ पे जो ओशंस के पास में जगह होती है वहाँ पे इसका रिवर्स प्रोसेस होता है, क्योंकि वाटर इससे रिवर्स काम करता है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो वहाँ पे अपर लेयर जो है वो गर्म होती है, नीचे वाली ठंडी होती है। वहाँ पे जो अब यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है वहाँ पे चीजें ऊपर दिखनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप सामने से कोई शिप को आता हुआ देख रहे हैं, एक्सपेक्ट तो किया जाता है कि आई लेवल पे या सामने पे होगा, तो शिप ऊपर दिखाई देता है। दैट इज नोन एज बिल्डिंग। हाँ जी, आप क्वेश्चन नंबर 7 देख लो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 8, the image of an object positioned at twice the focal length of a diverging lens will डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है? ठीक है जी, कनकेव लेंस की फोकल लेंथ से डबल डिस्टेंस पे रखा है, तो व्हाट अबाउट द इमेज? Will it be same as the size of the object? Will it be inverted? Will it be enlarged? Will it be virtual? Convex lens, पहली ऑप्शन दी है सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कैन इट बी ट्रू? नो। सेकेंड इज इन्वर्टेड। कन्वेक्स लेंस इन्वर्टेड नहीं बनाता, रियल बनाता है। एनलार्ज्ड? नो। वर्चुअल इज द ओनली आंसर। Ninth question, a convex lens A of focal length 20 cm, convex lens B of focal length 5 cm are along the same axis, the distance between them। देखो D डिस्टेंस कितना आएगा?
हाँ जी, एनिमल। दोनों लेंसेज एक दूसरे से ऑपोजिट बिहेवियर शो कर रहे हैं। इंसिडेंट लाइट इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दैट मींस इट इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, और वापस उसको इंफिनिटी पर ही जाना है। 15 सेंटीमीटर्स इसका आंसर है। हाँ जी, कैसे करोगे बताओ? आंसर ऑप्शंस में तो है, बट आई डोंट नो सही है कि गलत है। आप बताओ कैसे करोगे? यहाँ से लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो इट विल हैव अ टेंडेंसी ऑफ डाइवर्जन। ऐसे जा रही है। नाउ ये तो पहला कौन सा बोला? कन्वेक्स। अच्छा, पहले कन्वेक्स ले रहे, ठीक है। So we have a convex lens. Light is traveling parallel to principal axis, will have a tendency of reaching the focus. This distance is 20 centimeters. ठीक है। यहाँ पे सर उसका जो फोकस इसकी फोकस पे मीट करेगा। ठीक है, यहाँ बना दे। ठीक है, अगर आंसर इज करेक्ट। सर वो 20 है, वो उसका फोकस 5 पे डिस्टेंस 5। Why is it 5 centimeters?
देखो ना, हमारे लिए जो सेकेंड लेंस है वो कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर्स गिवन है। अगर आप लेंस फॉर्मूला लगाते हैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है, ठीक है। अब f हमें गिवन है कितना है, 5 सेंटीमीटर्स, 5 सेंटीमीटर्स इक्वल टू 1/v, v बनना है इंफिनिटी में क्योंकि पैरेलल जाना है, तो माइनस 1/v। कैसे ही करोगे? इज इन नेगेटिव, लो जी माइनस में डाल देते हैं, तो अब u कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर्स आ गया, ठीक है। अब देखो u पॉजिटिव में आ रहा है, if u is coming out to be positive, that means जो ऑब्जेक्ट है वो इसके लेफ्ट साइड पे नहीं इसके राइट पे रखा होगा, इसलिए ये वाला डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर आ गया। टोटल वाज 20, दिस इज 5, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस ऑटोमेटिकली 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। बैठिए, नेक्स्ट। The distance between an object and its image on the principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeters is 45 centimeters. Then the distance in centimeters of the object from the lens is. हाँ जी,
नहीं हुआ? देखो फॉर्मूला तो आपको यही लगाना है, द ओनली एडिशनल आपको इंफॉर्मेशन देनी है कि v प्लस u इज 45, फोकल लेंथ गिवन है, तो यहाँ से v की वैल्यू 45 माइनस u पुट करके सॉल्व करेंगे। हाँ जी 15 सेंटीमीटर, ठीक है आपका आंसर। नेक्स्ट देखो 11. At sunrise and sunset, the sun looks redder than at midday because सन का एक्चुअल कलर क्या होता है? स्कैटरिंग लाइट। सन का एक्चुअल कलर क्या होता है? वाइट, ठीक है। First question, in a rainbow, secondary rainbow is always fainter as compared to primary rainbow. ठीक है, तो दो तीन जो रह गए घर पे पढ़ के देख लेना अपने आप। आज हम इतना ही कर रहे हैं। That's it for today. Thank you.